ओम श्री गणेशाय नमः। श्री नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्रम। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए नवग्रह शांति का तथा साथ ही नवग्रह पीड़ा को दूर करने वाला अत्यंत ही शक्तिशाली तथा महाचमत्कारी स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। इस स्तोत्र का नाम है नवग्रह पीड़ा हर स्तोत्र। जैसा कि इसका नाम है उसी प्रकार से यह कार्य करने वाला भी है। सभी प्रकार के ग्रहों की बाधाओं को, सभी प्रकार के ग्रह दोषों को शांति प्रदान करने वाला यह स्तोत्र किसी चमत्कार से कम नहीं। जो भी भक्त नित्य इस पावन स्तोत्र को श्रवण करते हैं तो उनके जीवन से सभी प्रकार के दुखों का, विपत्तियों का, कष्टों का अंत हो जाता है और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास जी ने ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए नवग्रह स्तोत्र की रचना की थी। भगवान श्री वेदव्यास जी के मुखार बिंद से प्रकट इस स्तुति को जो भी व्यक्ति एकाग्रचित्त हो करके दिन हो अथवा तो रात हो कभी भी इसका पाठ श्रवण कर सकते हैं, उसके समस्त विघ्न शांत हो जाते हैं। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से दुष्स्वप्नों का अंत हो जाता है तथा साथ ही अतुलनीय ऐश्वर्य एवं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र को चाहे बुजुर्ग लोग हों, चाहे युवा हों, चाहे तो बच्चे ही क्यों ना हों, सभी श्रवण कर सकते हैं। सभी को समान रूप से इस स्तोत्र का लाभ प्राप्त होना है। नवग्रह स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करना चाहिए या फिर इस स्तोत्र को यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस स्तोत्र को आप सभी भक्त पूरा अवश्य श्रवण करें। सभी ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, चाहे वो शनि की दशा चल रही हो या फिर मंगल की दशा चल रही हो, चाहे गुरु की दशा चल रही हो या सूर्य की दशा चल रही हो या फिर राहु केतु कोई भी ग्रह आपको परेशान यदि कर रहा है, आपके ऊपर दशा चल रही है, तो सभी ग्रह दशाओं को शांत करने के लिए इस स्तोत्र को आप नित्य श्रवण करें। आपको इसका लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस स्तोत्र को श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्रम। जपाकुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिसङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रह
मस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रथमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयाः। श्रीवेदव्यासविरचितम् आदित्यादि नवग्रह स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रथमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयाः। जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं।
हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं
मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकास्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्त्रसमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकास्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्त्रसमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं
तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम्
स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्प्रसमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशया जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिसङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्प्रसमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशया जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिसङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहं
पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिसङ्कृतसाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारीन्द्रपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वास्त्रसमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयाः। श्रीवेदव्यासविरचितम् आदित्यादि नवग्रह स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।